नमस्कार आपण समस्त को यही वीडियो रे बहुत बहुत स्वागत। तो आज यही वीडियो रे मु आपण मान सहित कोरेसिव डायमेंशन रो राइट डाउन द कोरेसिव डायमेंशन मीनिंग अर्थ एंड कोरेसिव डायमेंशन ऑफ द चेंजिंग नेचर ऑफ इंडिया स्टेट रो किछि नोट्स टा मु शेयर करबी और वीडियो आगो को कहबी जे आपण मान यार पीडीएफ टा किपर पाई पाइबे। तो चलो देखिए फास्ट द कोरेसिव डायमेंशन मीनिंग फास्ट देखिए। मीनिंग कहले कोन बुझी हमें ना द कोरेसिव डायमेंशन रिफर्स टू द यूज ऑफ फोर्स पावर और अथॉरिटी बाय द स्टेट टू compel individuals or group to comply with its policy gote law gote and regulations. It is one of the essential aspect of state power and governance माने गोटे essential निहांती आवश्यक aspects of the state power and governance alongside other dimensions like administrative, normative and allocative dimensions to the core dimensions. Next देखिबा कोन the coercive dimension encompasses the state ability to enforce law, maintain order, and exercise control over its citizens through various means such as law enforcement, military, and legal systems. How kon rahichi? The changing nature of India state can be analyzed through various coercive dimensions. These dimensions highlight the use of force or control by the state. ये जो सब कौन गोटे स्टेट गोटा कंट्रोल मध्य होची आउ इन डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस एंड पॉलिसी विभिन्न प्रकार डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस और विभिन्न पॉलिसी जो सब इम्प्लीमेशन द्वारा ये सब कौन फोर्सफुली आउ फोर्स रे और कंट्रोल यूज ऑफ फोर्स माने बहुत प्रकार यूज करा होची आउ कंट्रोल बाय द स्टेट हर आर सम की कोरेसिव डायमेंशन दैट हैव एवलप टाइम इन द इंडिया स्टेट जो इंडिया स्टेट रही जो नेचर होची तो किसी कोरेसिव सब डायमेंशन होची। फास्ट देखिया कोन ना सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट। सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट द इंडिया स्टेट्स कोरेसिव डायमेंशंस मेंटेनिंग इंटरनल सिक्योरिटी जो अंत है कोन सिक्योरिटी देबा एंड एनफोर्सिंग द लॉ हैज बीन ए क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द फंक्शनिंग। दिस इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसी, पार्लियामेंटरी प्रोसेस and intelligence to tackle internal threats such as insurgency, terrorism and communal violence. Now, कौन रही ना emergency powers. Emergency power कौन? The Indian state has invoked emergency force powers under the constitution during the critical period. Critical period सब emergency power सब लागू है तो emergency power critical period कौन होगा? The India state has involved emergency powers under the constitution during the critical periods to the consolidation its authority and control. The most notable instance were the declaration of the state of emergency in 1975 and the important implementation of president's rule in certain states to address political instability. Surveillance and intelligence. The state's use of surveillance and intelligence mechanism has expanded significantly with technological advancement, and agencies like the Intelligence Bureau and Central Bureau and of Investigation play a critical role in gathering information and ensuring internal stability. सब stability पे internal stability पे ये सब जो सब कौन institutions को रखा जायछि। सोशल कंट्रोल एंड प्रोटेस्ट सप्रेशन। सोशल सामाजिक सब कंट्रोल करबा और जो सब प्रोटेस्ट को सप्रेशन माने दबेबा। The Indian state has at times employed coercive measures to control dissent and suppress protest or demonstration that challenge its policy or authority. This has led to concerns about freedom of expression and human rights. Next देखिए armed force. तो armed force कौन ना armed force the Indian armed forces play a vital role in guarding the nation's territorial integrity and sovereignty. ये सब sovereignty और territorial सब कौन सब तांके सब गाइड भाव करंती गोटे गाइडिंग करंती they have been used in internal and external security operation including counter insurgency and peacekeeping missions. सब कौन ना internal security operation गोटे करबे external बाहर सब security operation गोटे including counter सब आउ कौन ना पीस कीपिंग मिशन सब शांतिपूर्ण सब मिशन को से सब करती जो आर्मी फोर्स रही इंडियन रो। आउ कौन देखिए लास्ट ब्रॉडर मैनेजमेंट बेले कौन जो ब्रॉडर मैनेजमेंट तो सब विभिन्न सब कौन बॉर्डर को सब मैनेज करा जाए। द इंडिया स्टेट्स कोरेसिव डायमेंशन इविडेंट इन इट्स इफेक्ट टू मैनेज एंड सिक्योर इट्स इंटरनल बॉर्डर्स पार्टिकुलरली इन एरियाज विथ ignoring disputes or security threats। सब कौन dispute और threats सब कौन border management सब करती
नेक्स्ट देखा साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर वारफेयर। तो साइबर सिक्योरिटी जो सब साइबर से जो सब ऑनलाइन ठकई हुए से सब सिक्योरिटी और साइबर को सब देखा वारफेयर जो साइबर सब जो माने ऑनलाइन सब जो वारफेयर सब चले with the growing significance of the digital domain रे the India state has also focused on building capabilities for cyber security and cyber warfare to safeguard critical infrastructure and networks। ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି the changing nature of the India state reflects several coercive dimensions that raise important questions about the balance between the maintaining security and the safeguard individual rights and freedoms। କ'ଣ ନା the changing nature of India state reflects the India state जो changing nature ଅଛି so coercive dimension उपरू नेगिरी ଆଉ କିଛି କ'ଣ that arise important questions about the balance between ତାହାକୁ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା balance between maintaining security ଆମେ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ତାକୁ କେମିତି ବାଲାନ୍ସ କରିବା इन सेपारेट इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम गोटे इंडिविजुअल राइट्स आउ फ्रीडम अधिकार आउ स्वतंत्र को आम किपर कौन मानते प्रोटेक्ट करवा बजाय रखा सेफागेट देवा ये सबको से कोर्सिव डायमेंशन कौन फोकस करता है आईपरी मुझे आप कोर्सिव डायमेंशन डिस्कसन कली जदि आप पीडीएफ चाहती डिस्क्रिप्शन आम टेलीग्राम लिंक अच्छी से जॉइन हाँ आप सब नोट्स मिल जाए। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ वाचिंग दिस वीडियो।